Welcome my dear friends. Today we will do 3 questions from exercise 14.1 probability chapter 14 CBSE class 10 maths. Question number 4. Which of the following cannot be the probability of an event? So options given 4. A 2 by 3, B minus 1.5, C 15%, D 0.7. Solution. The probability of an event is greater or equal to 0 and less than or equal to 1. That is, probability of an event 0 less than or equal to probability, and probability is less than or equal to 1. So the probability cannot be negative, that is minus 1.5. So answer is B. Now next question. Question 5. If PE is equal to 0.05, what is the probability of not E? Solution. Probability of an event E and probability of the event not E are complementary events and their sum is equal to 1. That is PE plus P not E is equal to 1. Given P is equal to 0.05, therefore P E bar, P नॉट ई को हम ई बार से डिनोट करते हैं, तो P ई बार इज इक्वल टू P नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05 इज इक्वल टू 0.95. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. A bag contains lemon flavored candies only. Lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? First part, an orange flavored candy. Second part, a lemon flavored candy. Solution. First part. Let E be an event of getting an orange flavored candy. It is impossible to get an orange flavored candy. Why? As bag does not contain any orange flavored candy. So there is no outcome favorable to it, that is orange flavored candy. So PE is equal to 0. So this is a impossible event. Now the second question. A lemon flavored candy. The solution. Let F be an event of getting a lemon flavored candy. It is a sure event or certain event as bag contains all lemon flavored candy. So the number of favorable outcomes is the same as the number of all possible outcomes. So PF is equal to 1. Suppose बैग में 10 लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं और मालिनी टेक्स आउट 1. सो फेवरेबल आउटकम्स कितना है 10 और टोटल आउटकम्स कितना है 10. तो प्रोबेबिलिटी पी एफ इज इक्वल टू 10/10 इज इक्वल टू 1. सो इस क्वेश्चनों में अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट्स लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा. इसके अतिरिक्त भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा. और आप सजेशन दे सकते हैं कि सिस्टम और मेथड को और ज़्यादा कैसे इम्प्रूव किया जाए और फ्यूचर में वीडियो किस टॉपिक या चैप्टर पर बनाए जाएं. विद दिस बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.